हॅपी दिवाळी. आणि मी आज चालली आहे एका अशा लेडीला भेटायला जी की नवी मुंबईमध्ये राहते आणि ती तुमच्यासारख्या आणि माझ्यासारख्या बऱ्याच लेडीजला एम्पावर करते, बिल्ड करते, स्ट्रॉंग बनवते आणि त्यांना त्यांच्या स्किल डेव्हलपमेंट मध्ये मदत करते, त्यांना मेंटल स्ट्रेस पासून सुद्धा फ्री करते. कारण त्यांच्या अशा अशा योजना आहेत, त्यांच्या अशा अशा कार्यक्रम असतात, कल्चरली म्हणा किंवा तुम्ही एखादी ऍक्टिव्हिटीज म्हणा की ज्या काही आपल्याला आवडतात त्याच्यामधून. तर चला मग भेटूया गाडगे नहाटाला, ज्या आहेत विजय नाटा फाउंडेशन महिला विकास मंचच्या चेअरपर्सन. चला मग. Hi ma'am. Hi. Happy Diwali. Happy Diwali to you too, Shraddha. How are you? I'm good. How are you? Good. So I'm just excited to know कि where we are going and आज जो हम activity करने वाले हैं उसके लिए. So let's go. Let's go. Okay, ma'am. So I was so excited to meet you. I was planning this from many days, but finally we are together. And I have heard many things related to our Mahila Vikas Manch. So I know this the activity for which we are going is also related to our Mahila Vikas Manch, which is founded by Vijay Nata Foundation. Yes. So can you just let me know at least now where are we going? It's not that much of a surprise. We are going to an area called Nerul in Navi Mumbai. Okay. We have our Vibhag Karyakarta there. They have organized this thing where the children have made killas outside their societies. Okay. Which is a very common practice during Diwali in India. तो हम वहाँ पे जा रहे हैं वो किले देखने एंड हमारे जो महिला विकास मंच के मेंबर्स हैं उनसे मिलने. ओके मैम. सो वहाँ पे आई थिंक सो दिवाली थी तो उन्होंने मे बी कंपटीशन रखा होगा. हम लोग में ऐसे होता है कि किला बांधणे स्पर्धा, तुम्हाला माहितीच असेल ना. तो किला बांधणे स्पर्धा ये एक कंपटीशन होता है. मोस्ट प्रोबेबली वो रहती है सोसाइटी में. देन दे बिल्ड डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्ट्स एंड एवरीथिंग. सो नाइस टू हियर दैट आवर फाउंडेशन also goes in a society, appreciate the child, the kids who are making this killas, because abhi as you all know ki because of this social media we are just getting back for our the tradition. हम हमारे tradition को भूल रहे हैं, but the societies अभी भी ये सब चालू रखे. so nice of them. also मैं जानना चाहती हूँ कि हमारी ये जो महिला विकास मंच की जो फाउंडेशन है which is founded by विजय नाटा सर, तो उनकी तरफ से और क्या क्या ऐसी योजनाएं हैं जो हम लेडीज के लिए करते हैं, या फिर in future we have any more plans for ladies, for the young girls, for the working professionals. As we know that अगर हाउसवाइफ भी रहेगी but due to a financial भी इतना ज्यादा खर्चे हो रहे कि financially lady has to support a man. Correct. So that they can grow together, their yes. family can grow and they can achieve whatever they want. तो अभी as a foundation, do we have any upcoming plans for them? Of course, I mean Vijay Nata Foundation has very big plans for our Mahila Vikas Manch. महिलाओं का क्या होता है, of course you're absolutely right कि working women के लिए कुछ events करना and जो women होती है जो housewives है उनके लिए कुछ ऐसा करना जिसके लिए they can contribute financially to their families. But I think most important जो महिला विकास मंच एक्चुअली सेंटर करता है वो है मेंटल हेल्थ ऑफ अ वुमेन. बिकॉज चाहे वो वर्किंग वुमेन है, चाहे वो वुमेन विद अ फैमिली विद चिल्ड्रन और कोई हाउसवाइफ है, वो लोग इतना सब जगल करते हैं. अ वुमेन इज you can say the backbone of a family. So they go through so much, but they have to be strong for so many people. So we want to be as a support for them, so that we can make them mentally happy, we can make them physically happy. So doing like things like having women मिलावा, जहाँ पे वो लोग अपने like minded women से मिलती हैं, नवी मुंबई की connect करती हैं, networking करती हैं, थोड़ा हंसी मजाक होता है, games होते हैं, picnics होते हैं. Also helping them in a way जैसे skill development. हम लोग छोटे छोटे training और programs रखते हैं उनके लिए, like a yoga retreat या skill developments
ब्यूटिशियन का कोर्स हो, sewing का कोर्स हो, कैंडल मेकिंग हो, फूड रिलेटेड हो, you know, whatever it is, whatever they want, we keep on having these workshops for them. And also over and above this, सारे जो cultural events होते हैं, we also celebrate that. So Mangala Gaur, and then your Ganpati, then your Navratri. Okay. So it is a lot of fun. I mean, if you're a part of our foundation, कुछ ना कुछ होता ही रहता है. हर हफ्ते हम मिलते हैं, हर 15 दिन में कोई एक big program होता है, हर जगह हर एरिया में कुछ ना कुछ workshops चलते रहते हैं हर week. So it's a very dynamic group. It's like a lot of fun. Okay. Also मुझे एक चीज आपको पूछनी है कि मैंने सुना था कि also our जो foundation है is also helping women with cancer. Okay, so what kind of help or the support we are giving? So this is something which my father-in-law, Mr. Vijay Nahata, it's very close to his heart, and this cause is something which he has been working for the last 15 years in Navi Mumbai. पिछले 15 सालों से यहाँ पे कैंसर शिविर लगते हैं, कैंसर कैंप्स एवरी ईयर लगा है. उसमें women के after the age of 40 they are susceptible to a lot of different types of cancer which are relating to the reproductive parts of a woman, like breast cancer, cervical cancer, ovarian cancer, जिसके टेस्ट firstly readily available नहीं होते, secondly they are very expensive. अगर आपको ये टेस्ट कराने हैं तो you have to shell out 50 to 60,000 of rupees, which सब महिलाएं नहीं कर सकती. Most of the time महिलाएं बोलती है अरे हम तो अपना देख लेंगे, we have to take care of so many other things in the house with our family and everything. So we make sure कि ये एक बहुत important part जो women health का है और जो women को after the age of 40 most of the women को attack कर सकता है, वो हम हटा दें. तो इसलिए every year we have this कैंप जहाँ पे ये डॉक्टर्स फ्रॉम टाटा हॉस्पिटल, डॉक्टर्स फ्रॉम डी वाई पाटिल हॉस्पिटल, दे कम एंड दे टेस्ट द वुमेन फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल दीज कैंसर टेस्ट. इनफैक्ट सिर्फ टेस्टिंग ही नहीं, हमारे पास डाटा होता है, उनके सारे ब्लड रिपोर्ट्स हमारे पास आते हैं. इन केस अगर किसी वुमेन का डिटेक्ट हुआ अनफॉर्चुनेटली तो हम उनको कॉन्टैक्ट करते हैं. वी टेक देम टू टाटा हॉस्पिटल, डी वाई पाटिल हॉस्पिटल or any other dedicated hospital which we have in our circle, and वहाँ पे उनका हम treatment भी कराते हैं, which is mostly at free of cost of very minimal reduced prices. So that's great. This is, I think, the best initiative because as you rightly said कि not every woman can afford 50-60,000. We have many such women around us कि जिनका फैमिली इतना अर्निंग नहीं करता है, एंड देन वो क्या करती है टू सेव द मनी, sometimes they don't even open up. Correct. वो किसी को बताती भी नहीं है, and then that goes on the last stage, and then उनको फिर वो सब करना पड़ता है. So this is a great initiative, I think, which we have taken, and also I think there are many courses, right, which are Mahila Vikas Manch has, because I have heard of few that we have the beautician, the beauty parlor thing, then we have the sewing machine, then we have Mehndi, Rangoli, and I think many more. Baking, and so many things. So what we do is every week or every 15 days हम अपने महिला विकास मंच के विभाग कार्यकर्ताओं से मिलते हैं जो हर एरिया में हमारे अपॉइंटेड पीपल है. वो लोग हमको बताते हैं कि उनके एरिया के लोगों को क्या करना है. तो जैसे कोई एरिया है उनको वहाँ पे बेकिंग सीखना है तो फिर हम वहाँ पे वर्कशॉप रखेंगे, या 5-day वर्कशॉप या 7-day वर्कशॉप जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बेकिंग सिखाया जाएगा, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कोई भी ऐसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सिखाए जाएंगे. एंड आई किड यू नॉट, आई मीन देयर आर so many women जिनसे मैं मिली हूँ who have really lucratively इसको यूज करके उन्होंने अभी businesses शुरू करे from home. I am so happy, and I feel progress starts one step at a time. अगर आप एक step लोगे तो ही आप second step पे जा सकते हो. And I feel that the women are so strong, कि they are so strong and they are so like वेलकमिंग टू लर्न. मतलब कोई भी इवेंट होता है सारी विमेन आती हैं, तो इससे पता चलता है कि कितना ज्यादा उनको इस चीज की जरूरत थी.
Right. And also, I would like to tell you all that we have a power of 4,000 women. Okay, and this was 3,500 the last week, right, ma'am? Yes. And now it is 4,000. So we are just growing day by day. तो अगर आप भी आना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो हमारा फाउंडेशन, यू आर ऑल वेलकम, बिकॉज वी हैव मेनी स्किल्स, वी हैव मेनी वर्कशॉप्स, वी आर एंगेज इन कल्चरल एक्टिविटीज, ऑल्सो वी डू सम एजुकेशन रिलेटेड, वी हैव द सेमिनार्स, द वर्कशॉप, सो वी हेल्प वुमेन आई थिंक ग्रोइंग इन ऑल द फील्ड्स, नॉट ओनली education, not only help them medically, but we also help women to engage in few activities so that वो उनका घर का जो काम रहता है, जो स्ट्रेस रहता है, वो बाहर रखे and she can enjoy her life, because I know women's को घर का काम they give priority to that, but I think कि they should also prioritize their self. Correct. I should know कि importance of me. If because I'm not strong, if I'm not giving time to myself, then I think आगे जाके I will miss that. Of course. So our foundation is helping women to grow, to learn, to explore the world, to learn, and also even though if you're not if you're giving 7 days, 5 days workshop, but women's घर पे जाके खुद का घर पे setup करके they can earn. So financially We also help them to set up. Achha, we also have yes. that also, that we give a setup to Yes. them. I remember one experience, or I can narrate this thing that I knew about your Mahila Vikas, this thing that sewing machine का जो Yes. course हम देते हैं, उसके बाद we give a setup as well to them. We give them a setup, a place where they can do it, and they have actually started commercially making, stitching, sewing and selling it. सो दॅट्स ग्रेट. अजून काय पाहिजे? आणि आय थिंक आता आम्ही नेरुळला पोहोचलोय, जिथे आम्ही किल्ले बांधणे स्पर्धेचे किल्ले बघणार आहोत, मॅम सोबत गप्पा मारणार आहोत आणि तिकडच्या लोकांना सुद्धा भेटणार आहोत. चला मग बघूया, आपण आता पोहोचतोय लवकरच. Hi. मैं ठीक हूँ. How are you? Happy Diwali. Hi. Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali. अरे नमस्कार. कैसे आप? आइए. आइए. Happy Diwali. कैसे हो आप? ठीक हूँ. हाय नमस्कार. कैसे हो? कैसे हो? बिल्कुल ठीक. हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली. हाय हाउ आर यू? हैप्पी Yes, I'm दिवाली. good. आई एम सॉरी आई एम लेट. No, no, it's इन लोगों okay. ने मुझे पकड़ लिया. अरे सो सॉरी. नीचे ना, अच्छा इधर उधर जाना है सबको. Just happy to see so many women. If you can see that, जब भी हम लोग आए थे, there were 2, 4, and now women are just. But this is what happens, yeah, there is so much support that we have of our women. It's like it gives you that strength, to just move on. Also, I think our Vijay Nata Foundation is also growing, and this is the backbone. Our Vijay Nata sir is the one who is so strong कि सब लोग बराबर, मतलब उनको जो भी help चाहिए sir उनको कर रहे हैं, and this is how we are growing. We are enhancing our power, empowering our women, and growing together. So Vijay Nahata ji is such a visionary because he's so well educated. He's been an ex-IAS officer.
Right. He was the municipal commissioner of Navi Mumbai. Right. He's got so many awards. His, he has so much, 33 years of experience in administration. Almost 10 to 15 years of experience in politics. Right. So he is such a visionary that this is all his creation. Right. We are just, doing his bidding. So I can say that we are just the front page. Yes. Okay, but Vijay Nata sir is the actual who is running, who is creating, who is giving us a vision, Yes. and we are just following what he has in his mind. Yes, and we are 100%. just doing that. So now we have reached this third society, and again we have a beautiful fort. कैसे हैं? नमस्कार. नमस्कार. Oh wow. मस्त बनवलंय. So nice. पुन्हा एकदा एक सुंदर किल्ला. So beautiful. लाडू घेऊन. आता आनंद महिना खायला सगळ्या. So ये लोग ने भी मतलब एकदम nice. Yeah, like so much vision, so much, hard work. Creativity. Yes. And that to this kids. Imagine. Very good. बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय भवानी. जय शिवाजी. जय भवानी. जय शिवाजी. हर हर महादेव. हर हर महादेव. हॅपी दिवाळी. Happy Diwali. सो गार्गी मॅम आहेत ज्या आहेत विजय नाटा फाउंडेशन मध्ये. तो खूप छान तुम्ही हे जे किल्ले बांधले ते केलंय. येस मॅम. Yes. आय थिंक इट्स अमेझिंग. Amazing. हार्डवर्क, तुमचं क्रिएटिव्हिटी खूप छान होती. तर एकदा ह्या लहान मुलांसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. थँक्यू. तुमच्यामुळे आम्हाला हे किल्ले नवी मुंबईत बघायला मिळतात. कारण वेळ खूप कमी असतो आणि सगळे किल्ले आपण we can't climb those. Of course. But now because of all these kids we can see all these killes, gords in our Navi Mumbai. Yes. So thank you so much. Thank you so much. So much creativity. कितना अच्छा करा है आपने. इतना सुंदर बनाया है. मुझे बहुत अच्छा लगा. और छोटे छोटे डिटेल्स जैसे फ्लैग है, छोटे छोटे देखो वहाँ पे उन्होंने वो रखा है टैंक, घर बनाए हैं, छोटे छोटे लोग. बहुत बहुत छान, खूप छान. धन्यवाद. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय भवानी. जय शिवाजी. जय भवानी. जय शिवाजी. जय भवानी. जय शिवाजी. नमस्कार, माझं नाव ओंकार अनिल तेटमे. आम्ही सगळ्यांनी मिळून हा किल्ला बनवला आहे सेंच्युरी बिल्डिंग मधून सेक्टर 16 मध्ये. तर आम्ही या किल्ल्याचं नाव सेंच्युरीज गड ठेवले आहे. आणि ह्या किल्ल्याची रचना ज्यांनी केली ते म्हणजे गौरव आणि पवन दादा. आणि सगळ्यांनी मग छोटे मोठे काम करून किल्ल्याचे डेकोरेशन वगैरे केलं. So thank you so much मैम. आज का मेरा दिन जो था it was super. Thank you so much. आपकी वजह से I got an opportunity to see beautiful किल्लास. and ये सारे हमारे जो महिला विकास मंच के लेडीज हैं उन सब से मुझे मिलने का मौका मिला. I look forward to meet you, and also I would love to be a part of your foundation because I see the upbringing, the skills and the empowerment we have in all our ladies. So thank you so much. Thank you so Thank you much. so much. तुम्ही सगळे आलात. Happy Diwali. Bye. सगळ्यांनी bye करा. विजय नाहटा फाउंडेशन के इस महिला विकास मंच की तरफ से आप लोगों को विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली. थैंक